भगवान दत्तात्रेय और माँ भगवती के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं साथ साथ आज की जन्म जयंती के अवसर को पावन, मंगल और आनंदित बनाने के लिए डोंडाईचा मालपुर से यहाँ भजन मंडली उपस्थित हुई है और वह भजन मंडली में हरिभक्त श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना कीर्तन हमारी इस पावन भूमि पर अपने शब्दों के द्वारा किया। और ये तपोभूमि में उन्होंने आज अपने कीर्तन के द्वारा अपनी तपश्चर्या इस भूमि में आज प्रदान की है। तो मालपुर से आई हुई भजन सावता श्री सावता माड़ी भजन मंडली के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जो भी नाथ भक्त आज यहाँ उपस्थित रहते हुए आज की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं। या वारकरी संप्रदायामध्ये नाथ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, दत्त संप्रदाय, दत्त संप्रदाय याचे उपासक संत एकनाथ महाराज, चैतन्य संप्रदायाचे उपासक जगद्गुरु तुकाराम महाराज, बाबाजी चैतन्य आणि ज्ञानोबरायांचा जो संप्रदाय हा नाथ संप्रदाय। म्हणून आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य मच्छिंद्राने बोध गोरक्षाशी केला। गोरक्ष वडला गहिनी प्रती, गहिनी प्रसादे निवृत्ती दातार आणि ज्ञानदेवा सार चोजविले। म्हणजे आम्ही सामान्य नाही, वारकरी संप्रदायासारखा पंथ, नाथांसारखे महान तपस्वी, त्याच्यानंतर रामकृष्ण हरी सारखा मंत्र, ज्ञानोबराय तुकोबरायांची ही परंपरा। म्हणून चैतन्य संप्रदाय स्वागत करे। जोरदार ताड़ीओथी આપણે વધાવી લઈશું સુંદર ભજન કીર્તન સાથે। આજના કાર્યક્રમમાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હોય તો તેમણે લગાવી દીધા છે, તો તેમને વિનંતી છે સ્ટેજ પર આવીને પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે અને તાળીઓનો ગડગડાટ તો આજે અટકવો ન જોઈએ। અસ્ખલિત ધારા કે આપણે તાળીઓ પાડતા રહીશું। संत सावता महाराज भजनी मंडळ आमचे मालपूरचे ग्रामस्थ सर्वांच्या वतीने बाबांच्या चरणी कोटी कोटी वंदन। तुम्हा सर्वांना उत्तम आरोग्य लाभो, आयुष्य लाभो आणि तुम्ही आपण सर्वांनी संपूर्ण आयुष्यभर देव, देश, धर्म आणि संस्कृती याची जोपासना करा। सदाचारी जीवन जगा। जीवनामध्ये पवित्र अन्न ग्रहण करायचं, गोमातेची सेवा करायची, आयुष्यामध्ये चुकीचा आहार करायचा नाही, निर्व्यसनी जीवन जगण्याचा संकल्प करा। पूजनीय साने दादांची आपला सर्वांवर कृपा आहे आणि म्हणून आपण सर्वांनी या ठिकाणी येऊन ही सेवा आम्हाला दिली। आमच्या मंडळाला बाबा आल्याबरोबर खूप समाधान वाटलं, मानसिक आनंद मिळाला, हरिपाठ झाला, कीर्तन झालं आणि या ठिकाणी जी शिस्त आहे ती शिस्त पाहून आम्ही आनंदित झालो। पुन्हा सर्वांना एकदा बाबांच्या चरणी आपण सर्वांनी नतमस्तक व्हावं। सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की।
समर्थ मच्छिंद्र जय जय मच्छिंद्र समर्थ जय जय चंडिका माता जय जय चंडिका माता जय जय चंडिका माता जय जय चंडिका. फार आनंद वाटला. मिले सूर मेरा तुम्हारा, हे अभंग मध्ये मिले सूर मेला ते फार आनंद वाटला आणि तेज आहे. आपण सगळ्यांचे सूर परमात्माचा जोडी जेव्हा मिळतात तेव्हा मोक्ष होऊन जातो.